Good afternoon, everyone. So let's start the class now. In the last lecture, we stopped at forced oscillation. We started talking about the forced oscillation, and that's where we stopped. Just a second. Be able to write now. Forced oscillation is basically a way of converting your damped oscillations into undamped oscillations. If you have any kind of motion which is damped, you can convert it into undamped oscillations by applying some kind of force on your system, and that would lead to your forced oscillation, and hence the name forced oscillation. What happens in this case? In the case of forced oscillation, as we said before, you would like to keep the amplitude of oscillation constant with time, right? Damped oscillation में बच्चे क्या होता है, आपका जो amplitude है वो continuously reduce होता रहता है. अब आप चाहते हो कि आप उस amplitude को constant रखें, which basically means that you would like to apply some periodic force so that your amplitude remains constant, and that force has to be a sinusoidal force. That means that this force can be either a sine function or a cosine function. Here f naught is the constant, omega is the frequency, and this omega is different from your damped oscillation as well as it is different from your undamped oscillation frequency. Remember, our undamped oscillation frequency was equal to square root k over m, and our damped oscillation frequency was equal to square root k over m minus b upon 2m whole square, and minus is outside. So this frequency is different than both of these frequencies over here. We'll talk about a specific case when this frequency becomes equal to omega naught, what happens in this case. But usually this is a variable frequency. An example of forced oscillation is, for example, if you are sitting on the swing, it is very important that you apply the force at a particular point of time, right? आप swing पे अगर बैठते हो, you cannot randomly apply force at any point of time. There is some particular location or particular time जब आप force apply करते हो, आपका force जो है वो most effective रहता है. Now, in the case of forced oscillation, what would happen is that in your regular equation, where we said that your net force would be equal to a restoring force, a resistive force, and now on the top of these two terms, you will have a third term which would be this sinusoidal force that you are applying periodically. This equation you can further solve it by saying that m times d2x over dt2, because your net force is equal to mass into acceleration. This would be equal to minus kx minus bb plus f naught sine omega t. This would be your equation now that you will have to solve for forced oscillation. We'll not go into the details of this equation, that what would happen to the solution of this equation. So, but this will be your equation of motion for forced oscillation. Let me repeat that. In the case of damped oscillation, you keep on continuously losing the energy. आपकी जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है. फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपकी जितनी एनर्जी का लॉस होता है, which basically means that जितनी एनर्जी आपकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस एनर्जी को you compensate by applying an external force, and that force has to be sinusoidal in its form, whether it's a sine function or cosine function, doesn't matter, right? Now this equation of motion is the equation that you will have to solve for forced oscillation. What would happen in the case of forced oscillation when the frequency of this force
ये वाली जो frequency हमने कहा that this frequency is different than this frequency and this frequency as well. In the specific case, when the frequency of this force that you are applying becomes equal to the natural frequency, then you say that resonance has happened. And what would happen in that case? Your amplitude is going to increase very drastically when the frequency of this force is equal to the natural frequency. That particular scenario would lead to a sudden increase in the amplitude of oscillation, and that particular scenario is called as resonance. उसको resonance कहते हैं. And let me show you a figure now. Excuse me, ma'am, can you please explain resonance for once? I'll show you from the figure here. Give me a second. Thank you. Okay. So this was your equation of motion that we discussed just now. Now, if you form this equation, this is the omega, which corresponds to the frequency of the force, external force that you are applying to compensate for the loss of energy. Now, in the case when this omega becomes equal to the natural frequency of your system, which is basically equal to square root k over m, then your amplitude would suddenly increase, and which is shown in this figure over here. Let's not talk about B being different right now. Let's talk just about at this particular value of omega naught. This is your amplitude on the y-axis. X-axis shows you the frequency of the force that you are applying. When this frequency becomes equal to natural frequency, there is a sudden jump in the amplitude, right? Irrespective of the value of B. And this is called as resonance phenomenon. इसको आप resonance बोलते हैं. This resonance is going to depend on your damping coefficient, which basically means that if there is no damping, then your amplitude would become infinite in this case. If your amplitude, if your damping coefficient is small, that means your resistive force is small, you will have a sharp beat. And as the value of damping coefficient keeps on increasing, your curve keeps on flattening, right? जैसे जैसे आपका डैम्पिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा, आपका जो एम्पलीट्यूड में चेंज होगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज वो उतना ड्रास्टिक नहीं होगा. And in the beginning of the lecture, where we saw a bridge collapsing because there were no damping forces intentionally applied on that bridge. There has to be some damping, but that damping coefficient was very small. उसकी वजह से क्या हुआ, जब वो external wind थी, उसकी frequency bridge की natural frequency के साथ match की. And similar was the case of glass shattering by sound. जब आप external frequency जो apply कर रहे हो, उसकी frequency natural frequency के साथ match कर गई, whether it was a bridge or a glass, amplitude आपका suddenly increase हो जाता है. And that is why the glass breaks down or the bridge collapsed. Now, that is also the reason why in the bridges as well as very tall buildings, they put dampers. बहुत सारी जो skyscrapers होती हैं, bridges होते हैं, उसमें अब dampers apply करते हैं. So that even if there is some external force whose frequency is equal to the natural frequency, but आपका अगर damping present होएगी तो आपका amplitude में drastic change नहीं होगा. There will still be oscillations, but जो oscillations होंगे वो उतने large नहीं होंगे. That could lead to collapse of a bridge. At least इस large magnitude के आपके oscillations नहीं होंगे इस case. That is the importance of damping. That's all we are going to talk about force. Ma'am, that means like the force, ma'am. हाँ जी बच्चे. Ma'am, it means the force oscillation is a.
Means the force oscillation is a kind of oscillation takes place when we apply force to the system. यस, आपके पास कोई डैम्प्ड ऑसिलेशन है, उस डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपके जो एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं, उस एनर्जी लॉसेस को अगर आप कंपनसेट करना चाहते हो तो आप उसमें एक अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मतलब अगर उसमें एनर्जी कॉम्पनसेट करेंगे तो अनडैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा। हाँ जी, फिर आप इवेंचुअली अनडैम्प्ड सिस्टम अचीव कर सकते हो। Excuse हाँ जी, me, कृष्ण राज। ma'am. Hmm? What do you mean by natural frequency? Every object has its natural frequency, right? Which is given by this number over here. Everything has an associated stiffness constant and everything has a mass. So every object has some natural frequency. We'll use the concept of natural frequency when we are going to talk about ultrasonic waves also. The same concept. Every object will have some kind of natural frequency associated with it. Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, मैम एक एग्जांपल बताना जिसमें आप ऐसे वो कहो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की होगी और फिर हम अप्लाई करेंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने जो कह रहे हैं कि आपके उसके इक्वल हो गई है। हेलो मैम वो एक एग्जांपल से अगर बता दो तो कि That's what I'm ये saying एग्जांपल है और इसमें कि इसमें ये पास्ट में जब कभी भी have you seen people cracking the glass by sound? आपने देखा है कभी? मैम वो जो Let me show you that video again. अच्छा मैम वो समझ गया वो गोल सा ग्लास का कांच का गोल सा पतला सा हाँ जी, simply someone can bring a thin glass close to his or her mouth and आप अपने sound की जो frequency change करके you can break that glass basically. What happens in that case is आप जो frequency change करते हो, so by changing that frequency you try to adjust the frequency equal to the natural frequency. Let me show you. तो मैम वो तो मैम समझ गया नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की जैसे इसमें ये ग्लास में इनिशियली अभी भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, बट वो वाइब्रेशंस उतने ज्यादा नहीं है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो आप साउंड अप्लाई कर रहे हो वो ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रहे हैं। एंड लुक एट सम पॉइंट वो जैसे ही उससे मैच करना शुरू करेगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा जैसे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के पास हो जाएगा। And that's why the glass eventually breaks down. तो इनिशियली जो एम्पलीट्यूड लेस आपको ग्लास में दिखा रहे थे, दैट मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी जो थी वो ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच नहीं कर रही थी, तो आपके जो ऑसिलेशंस हो रहे थे वो स्मॉल ऑसिलेशंस हो रहे थे। आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी स्टार्ट की, आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ज्यादा पास जाती चली गई, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला गया एंड इवेंचुअली जब आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गया, इट ब्रोक डाउन। हाँ जी बच्चे। मैम इसमें जो फोर्स है वो जैसे जो ब्रिज वाला केस था उसमें जो फोर्स वाला फैक्टर है वो विंड प्रोवाइड कर रहा है। उसमें जो फोर्स था, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैम जो ब्रिज वाला केस था जिसमें ब्रिज कोलैप्स होता है रेजोनेंस की वजह से, हाँ जी, उसमें जो फोर्स वाला फैक्टर है वो विंड प्रोवाइड करता है। हाँ जी, विंड आपका वो फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। और ब्रिज के अंदर जो उसकी तो सर मैम उसमें डैम्प कहाँ पे हो रहा होगा? ब्रिज के अंदर ब्रिज के पार्टिकल जो ऑसिलेशन कर रहे होंगे वो डैम्प कर रहे होंगे। हाँ जी, वो ब्रिज में, क्योंकि उस ब्रिज में कोई डैम्पिंग अप्लाई नहीं की गई थी इंटेंशनली, तो देयर वाज सम डैम्पिंग, बट जो डैम्पिंग थी वो वैसी डैम्पिंग थी विच वाज अनइंटेंशनली देयर, राइट। अब लोग क्या करते हैं कि ब्रिजेस और आपकी जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं उस पे इंटेंशनली डैम्पर्स लगाते हैं, क्योंकि उस ब्रिज में कोई एक्सटर्नल डैम्पिंग नहीं अप्लाई की थी, सो आपका जो डैम्पिंग कोफिशिएंट था वो स्मॉल था उस केस में, एंड उसकी वजह से जो आपका एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का है वो इतना लार्ज था फॉर एग्जांपल।
एंड लेट्स से आपने कुछ एक्सटर्नल डैम्पिंग उसमें अप्लाई कर दी, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कहीं ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा. तो मैम दैट इज द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग देयर. जो उसमें जो डैम्पर्स हैं वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को इरेगुलर बना देते हैं. वो उसकी उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे बेसिकली. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ जी बताइए. मैम अगर हमको स्टेबल बिल्डिंग बनानी होगी तो हम उसको डैम्पिंग कोफिशिएंट के साथ कैसे रिलेट करेंगे? उसमें आपको उसमें suitable amount of डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी. अगर आपकी बिल्डिंग सपोज बहुत टॉल बिल्डिंग है, लेट्स से उसमें आपके पास 200 फ्लोर्स हैं, राइट? तो Yes, अगर ma'am. जब विंड ब्लो करेगी तो जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देंगे. यस मैम. उसको कंट्रोल करने के लिए आप बिल्डिंग्स में डैम्पर्स अप्लाई करते हो. वो डैम्पर क्या करेंगे कि आपकी जो पहले जो था डैम्पिंग कोफिशिएंट जो स्मॉल था उसको वो लार्ज कर देंगे. तो जो आपकी बिल्डिंग अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेगी तो बिल्डिंग जो स्वे कर रही थी वो स्वे करने की उसकी वो जो है एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है मैम. इफ यू लुक एट दिस फिगर, अगर आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट स्मॉल है तो आपका एम्पलीट्यूड कहीं लार्ज है. अगर आप डैम्पिंग कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आपका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है. तो बिल्डिंग जो स्वे करने का एम्पलीट्यूड है वो आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा उस केस में. ठीक है मैम. थैंक यू. हाँ जी. मैम ये जो हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस के लिए, हाँ उसकी जी. जो हमारी फ्रीक्वेंसी है एंड जो हमारी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, आर बोथ ऑफ दोस सेम? Your damped frequency, it depends what kind of damping you are talking about. For example, आपने कोई natural object लिया है, right? And उसमें आपका जो damping coefficient कितना large है या कितना small है, वो उसके ऊपर depend करेगा. Okay, so मतलब the two of those don't necessarily have to be related. No, this Okay. frequency, because here I'm changing it, right? ये वो जो Yes, आपका ma'am. x एक्सिस है ये आपका फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर फोर्सेस दैट यू आर अप्लाइंग. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. बट अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए ठीक है. आपके ऑब्जेक्ट. ओके मैम, थैंक यू. मैम फिर तो हमें अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी मैच करनी है फिर जरूरी थोड़ा ना कि मैम विंड से वो चीज हो, तो किसी भी कोई रे हो सकती है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी से भी हो सकता है ना. बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अगर फ्रीक्वेंसी मैच करनी है तो मैम अगर कोई फ्रीक्वेंसी ही मैच करनी है, मैं बोल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ साउंड या फिर एयर हो, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कोई रे भी तो हो सकती है जो रेजोनेंस दे. आपके एलसीआर सर्किट में, अगर आप एलसीआर सर्किट की बात करते हैं, राइट, उसमें फिर आप उस रेडिएशन की बात करोगे, फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपकी बहुत टॉल बिल्डिंग है तो वो उस पर इतना फोर्स नहीं अप्लाई कर सकती ना कि आपकी बिल्डिंग है वो स्वे कर जाए, राइट? अगर आप एक एलसी सर्किट की बात करते हो, यूजुअली जब आप अपना रेडियो स्टेशन ट्यून करते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप अपने कैपेसिटर की वैल्यू उसमें वेरी कराते हो. इट्स बेसिकली एन एलसी सर्किट. तो आप जब अपनी कैपेसिटी की वैल्यू वेरी कराते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, और जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ वहां से पास हो रही है उससे मैच कर जाती है तो आप वो सिग्नल पिक कर लेते हो. सो एलसीआर सर्किट में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बच्चे. मैम जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं उसमें रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से इंटरनल एनर्जी थोड़ी कन्वर्ट हो जाती है और लॉस हो जाती है. इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी अच्छा, हाँ, इंटरनल sorry. एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. यस मैम. राइट. तो हाँ जी. जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होते हैं उसमें तो हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो हाँ अब जी. इस जगह पर फिर एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है क्योंकि एनर्जी तो अब भी लॉस ही हो रही है. एनर्जी कंजर्वेशन तो आपका हमेशा ही अप्लाई होता है बच्चे. एनर्जी इज नहीं मैम, ऑलवेज तो कंजर्व्ड. जब
नहीं, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। अब जैसे आपकी हम मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। दैट्स व्हाट आई थिंक योर क्वेश्चन इज। यस मैम, डैम्पिंग हाँ के जी, केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। हाँ जी। अब आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करा रहे हो, because you are saying that your energy input per cycle is exactly equal to decrease in mechanical energy in each cycle, right? जितना आप लॉस कर रहे हो उतनी ही एनर्जी आप इसको इनपुट दे रहे हो एक्सटर्नली, ओके तो आपकी एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी इस केस में। ओके। Now let's talk about the last topic of waves and oscillations. This is eddy currents. Do you know about eddy currents? Can someone answer that question? Eddy currents का नाम सुना है आपने? यस मैम, ट्रांसफार्मर्स में जो एनर्जी यस मैम, लॉस ट्रांसफार्मर। Exactly. ट्रांसफॉर्मर्स में आप मिनिमाइज करना चाहते हो एडी करंट्स को, राइट? यस मैम। Okay. Usually eddy currents are unwanted currents basically. Eddy currents का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? You say that आपका Lange's law says that आपका एक induced EMF प्रोड्यूस होता है which is equal to minus d phi by dt, and it opposes any change in magnetic flux. Either you are increasing flux or decreasing flux. It doesn't like anything. कोई भी change, it doesn't like it, right? So that is your induced EMF. Now what could happen is that, for example, if you have a metallic plate, the reason I'm saying metallic plate because metals में आपके electrons होते हैं, they are kind of free, वो freely इधर उधर move कर सकते हैं, तो आपकी जो induced EMF की वजह से आपके metals में जो है वो current flow करना start कर देगा, right? Now what would happen is that an example is given over here. I'm not going to draw it because my drawing is exceptionally poor. So यहाँ पे आपके एक permanent magnet है and उसमें आपके एक metallic plate है. इस metallic plate को आप इस magnet के through swing करा रहे हो basically. So what would happen is that, let's say आप इधर extreme में यहाँ पे लेके आए, आपने इस plate को release किया. जब ये plate इस Vidhi wants to come in. अब आपकी ये जो प्लेट है जब इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना स्टार्ट करेगी, सो व्हाट वुड हैपन, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? आप जैसे इसको इसमें एंटर कराओगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, दैट मींस यहाँ पे आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, यू नो, it basically opposes the change that is causing it. So what this induced EMF and current are going to do, they will try to oppose the motion of this plate inside this magnet, right? यही आपकी definition है induced EMF की. तो उस केस में what would happen is that आपके current जो इसमें flow करेंगे वो इस direction में flow करेंगे in such a way that it opposes the entry of this plate into the magnet. अब वो कैसे होगा? रितु प्लीज म्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स को. How would that happen? Okay, how would that happen? That would happen if the current flows in such a way that कि इस current के flow की वजह से जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होंगे वो नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, तो क्या होगा? आपका रिपेल होगा, और रिपेल होगा तो वो प्लेट की एंट्री को अपोज करेगा बेसिकली. राइट हैंड रूल आप अप्लाई करो. आप चाहते हो कि आपका जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करे. इस प्लेट के ऊपर करंट अपनी फिंगर्स को कर्ल करो ताकि थंब जो है वो आपका नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, which would give you current in this direction. अगर आप अब इसके ऊपर अपनी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हो, थंब जो है वो आपकी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगा. सो व्हाट वुड हैपन, नॉर्थ पोल हो गया. अब रिपेल करेंगे तो प्लेट की जो एंट्री होगी ये उसको अपोज करेगा. अपोज कैसे करेगा? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव कर रहा था वो इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा. Now let's take the another case. Once it has fully entered into this magnetic field, जब इसने इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर दिया है, now it will have certain velocity. That velocity is less than this velocity here. यहाँ पे जो अब आपकी वेलोसिटी होगी वो इस वेलोसिटी से लेस होगी. बट जब वो एक बार इसके अंदर आ गई है, अब
There is a magnetic field that is passing through this plate, but that magnetic field is constant, right? आपका constant magnetic field है, तब क्या होगा, आपकी ये प्लेट है, ये constant velocity के साथ में अंदर मूव करती रहेगी. फिर क्या होगा, जब ये प्लेट दूसरी तरफ एग्जिट करेगी, नाउ आपका मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा जो प्लेट के थ्रू पास होगा. फिर क्या होगा, अब आपका induced EMF and current, they will be produced in such a way that they will try to oppose this motion, which basically means that वो प्लेट को अब बाहर नहीं देना, बाहर जाने नहीं देना चाहेंगे. That means अब वो कब होगा, जब आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ होगा, तभी आपका अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा मैग्नेट में, राइट? तो आपकी प्लेट पे अब करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि आपका नॉर्थ पोल जो है, प्लेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ हो. फिर क्या होगा, वो प्लेट का जो बाहर की तरफ निकलना है वो उसको स्लो कर देगा. That could happen again if you curl your fingers here, you will say that your thumb is going to point out towards the south now, right? So आपका जो north है वो आपका south की तरफ हो गया है. तो दोनों मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो अब आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा. उसकी वजह से क्या होगा, प्लेट की जो वेलोसिटी है वो फिर से कम हो जाएगी. सो एट दिस पॉइंट इफ इट वाज v1, at this point if it was v2, and at this point it is v3. तो v3 है वो आपकी v2 से भी लेस हो गई. v2 was less than v1 already. आपकी प्लेट इस एक्सट्रीम में जाएगी, उसके बाद में जब ये वापस एंटर करना चाहेगी, अगेन जब वो वापस एंटर करेगी, आप फिर से उसका फ्लक्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जो फ्लक्स उसके थ्रू पास होगा. यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू दिस मैग्नेट. फिर से इसमें करंट फ्लो होंगे which will try to oppose the entry of plate in the magnetic field, right? फिर से आपकी प्लेट स्लो डाउन होगी, फिर से जब आपकी इसके कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, और फिर जब आपकी प्लेट इस तरफ एग्जिट करने की कोशिश करेगी तो आप मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस कर रहे हो. फिर से आपके इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी और करंट्स प्रोड्यूस होंगे जो इसका मोशन को अपोज करेंगे बेसिकली. So every time this plate enters or leaves the magnetic field of this magnet, there is going to be some force which is going to oppose the motion of plate. एक सिंगल साइकिल में ये 4 टाइम्स होगा. अगर लेट्स से आपने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, एक बार ये प्लेट यहाँ से एंटर करेगी, दैट वुड बी 1 टाइम. दूसरी बार जब यहाँ से एग्जिट करेगी, दैट वुड बी 2nd टाइम. थर्ड टाइम जब ये प्लेट वापस एंटर करेगी, एंड 4th टाइम जब वो यहाँ से एग्जिट करेगी. सो वन कंप्लीट साइकिल में 4 टाइम्स ऐसा होगा कि आपके induced EMF and eddy current will be produced in such a way that they will try to oppose the motion of plate. और हर बार आपकी जो प्लेट की वेलोसिटी है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, which basically means that after every oscillation आपकी प्लेट का जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, एंड इवेंचुअली आपकी जो प्लेट है वो स्टॉप कर जाएगी. That is your basically concept of eddy currents and how they can oppose the motion of an object. That's what has been written over here. Anyone has any doubt in this? Okay, so initially there were some applications of eddy currents. Eddy currents are unwanted currents in your transformers, but initially there were some applications of eddy currents. So what they used to do that, आपकी जो trains होती थी उसमें जो braking system होता था वो eddy currents पे based होता था. एक large सी electromagnet होती थी. Electromagnet you know कि आप current उसमें फ्लो कराओ, मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हो जाता है. दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो आपकी ट्रेन के साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच होता था. जब आपको ट्रेन को स्टॉप करना होता था, यू फ्लो अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब क्योंकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो रेलिंग है नीचे, दे आर रिलेटिवली मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, therefore there will be eddy currents in the rails, and eddy current की direction would be in such a way that it will try to oppose the motion of train, and that is how initially, these are not
common nowadays, but initially that's how the braking system in trains used to work. बड़ी बार बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें शार्प ब्लेड्स होते हैं, उनको स्टॉप करने के लिए भी एडी करंट्स की एप्लीकेशन होती है. But eddy currents are again unwanted currents usually, because they are converting your mechanical energy into internal energy. You are dissipating the energy. So usually what is done to reduce the eddy current is that जो आपके conducting parts हैं, for example previously हम लोगों ने जो plate throw की थी, in that plate, rather than making it a metallic single plate, I can cut slits through this plate, something like this. Now in this case what would happen is that because of these cuts over here, जो आपके large loops बन रहे थे current के, अब वो नहीं बन पाएंगे, and your plate will flow more freely. This plate will flow more freely as compared to this plate if you place it in a magnet. That is one way, by cutting slots. The second way is that इसी plate में आप इसको laminate करके and इसमें बीच में जगह जगह very thin layers of insulator place कर देते, right? Insulator या non-conducting material, whatever you want to call them, so that again the purpose is same, ताकि आपके large current loops नहीं बनेंगे क्योंकि आपके बीच में insulator उसमें हो जाते हैं. And this is the method that is used in your transformers to reduce the eddy currents. This is the last topic of waves and oscillations. So ma'am, eddy currents का effect is directly proportional to area. Can you Eddy say that? currents का no, it depends at what rate you are changing your magnetic field. आपकी जब plate enter कर रही है, at which rate you are changing your magnetic flux. No, but reduce करने के लिए तो we just simply Yes, reduce reduce its, करने के लिए हाँ जी, area. हाँ जी, हाँ जी. You can reduce the conducting area, not the area, the conducting area. Okay. हम कंडक्टिंग एरिया तो किसी भी तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, लाइक इफ वी टेक अ मेटालिक प्लेट एंड कट मल्टीपल डायगोनल लाइंस, दैट आल्सो विल स्टॉप द current from flowing in a clockwise direction or in anti-clockwise direction. So you are saying that you take a metallic plate and then you cut it in this direction, something Yes, like ma'am. this. Multiple Right. diagonal lines. Yeah, that's also fine. You can do that. It's probably this is simpler to do. That's why. Yeah. Yes. Hanji. Ma'am, as in the previous example, you take the example of train. hanji. अगर हम मैम उसमें ऐसे मेटलिक प्लेट को कट कर देते हैं तो मतलब स्पीड उसमें it will take time to decrease. What cut कर देते हैं तो? मैम जैसे पहले आपने रखी थी ये मेटलिक प्लेट. हाँ जी, अब अगर मैं इस प्लेट को कट कर देती हूँ तो इसकी जो स्पीड कम होगी, every time it enters and leaves the magnet, वो आपका reduction in speed would be less. हाँ, पहले से कम होगी. पहले से कम हो जाएगा. ठीक है मैम. Let's start the next class or the next topic. So the next topic is acoustics, and acoustics is basically the science, if you talk in very simple terms, that deals with the sound, whether it's production of sound, it's transmission of sound, or it's reflection of sound, absorption of sound, anything related to sound is basically comes under the acoustics. Sound are mechanical waves, so many times acoustics is also defined with reference to mechanical waves. कि mechanical waves की production है, detection है, propagation है, absorption है, reflection है, everything that could happen with sound waves or mechanical waves comes under your acoustics basically. We are going to talk about acoustics and its importance. Why is it important for us? And then there's a couple of terms which you probably won't understand now, such as reverberation time, absorption coefficient. How do we measure the absorption coefficient? And then there are ways in which you can define the
time inside the room for which the sound is going to be sound is going to persist once the speaker has stopped speaking, and then there are formula and what are the application of acoustics. So we'll go through these topics one by one. Again, acoustics basically deals with production, propagation, transmission, and detection of sound waves. Your propagation and transmission can include absorption, reflection of sound also. So that everything is included in these four terms when I'm talking about production, propagation, transmission, and detection of sound waves. We classify sound into three categories: infrasonic, audible, and ultrasonic. In this unit, we are going to talk about the audible part. What are the ways in which we can manage the audible sound in a room? And then in the next unit, we are going to talk about ultrasonic waves. Audible, as the name suggests, it's the only frequency which are audible to human being. Infrasonic as well as ultrasonic, they are inaudible to human beings. Now, if you talk about acoustics property or acoustical properties, because your sound is a mechanical wave, right? It needs a medium to propagate. आपकी जितनी भी mechanical waves होती हैं, they need a medium to propagate from one point to another point. And it is going to be reflected, it is going to be absorbed, or it is going to be transmitted by everything that it is going to fall upon, whether it's human beings also. We human beings are very good absorber of sound. आपकी sound wave किसी भी surface के ऊपर, for example, if you would have been sitting in a classroom, आपकी classroom में whether it's table, it's chair, it's whiteboard, blackboard, all the walls of the room, the ceiling, the floor, everything works as an absorber or reflector of sound. The only difference is that कुछ एक मटेरियल ऐसे होंगे जो साउंड को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एक मटेरियल ऐसे होंगे जो साउंड को कम एब्जॉर्ब करेंगे. जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट कम करेंगे, और जो कम एब्जॉर्ब करेंगे वो आपकी रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे. There is a science which is called as architectural acoustics, and this is a relatively new physics as compared to the other fields of the physics. Architectural acoustics, it basically deals with planning of a building or a room or auditorium or a hall in such a way that there is most advantageous flow of sound which is properly diffused throughout the room, to make sure that the complete audience gets the proper quality of sound. Everyone should be able to get the sound in proper form. That means the sound should be intelligible, and if it's a musical concert, then everyone should get a proper distribution of the music inside the room. There are ways in which you can focus sound at certain places also. For example, if you have surfaces such as concave surfaces and such kind of curved surfaces, if you go into churches and all those places, right, where there is a big dome there, if you speak something, the sound basically, there is a very large reverberation time in those cases, right? So all that can be designed, and that is done intentionally in those places. For example, in temples and churches and all those places, so that the sound reverberates more basically. So this architectural acoustics basically deals with that science, that in which you design a room in such a way that the sound is properly diffused to all the audiences that are present in that particular room. That is your architectural acoustics. For example, take the three cases here. If the speaker is standing out here, and if he is speaking and all the people are sitting on the flat surface, then what would happen is that there is no reflection of sound, because there is nothing present to reflect the sound nearby. The people who are sitting here, they will be hearing the direct sound from the speaker, right? On the top of that, people who are sitting at the back,
the sound quality will be poor for them. The reason being that there are the people who are sitting in the front over here and they act as absorber of sound. And that is the reason we have elevated rooms for the audience, so that not only it helps in making eye contact, that's also one of the advantages. The second advantage is that everyone in the audience gets the direct sound from the speaker. Now, if this is enclosed inside a room, the audience, they will hear the direct sound, but they will also hear the reflected sound also from all the surfaces inside the room. This reflected sound decides for how long the sound is going to persist once the speaker has stopped speaking. And that is basically defined as reverberation time. It basically means that when a speaker is speaking, उसकी जो sound है, it's going to spread out. Spread होएगी. हाँ जी मयंक. मैम वो पिछले स्लाइड में सेकंड केस में कैसे उसको ढंग से सुनाई देगा? आपने बोला कि फर्स्ट केस में लेस एब्जॉर्प्शन होगी. फर्स्ट केस में क्या होगा? आपके ये जो people who are standing in the front, right? Yes. They will absorb the sound, and आपके जो लोग पीछे बैठे हैं उनके पास sound quality उतनी better नहीं पहुंचेगी as compared to the second case, क्योंकि speaker की sound, we said it's going to spread out, so it's spread out in kind of a cone if you assume it, right? एक cone की direction में आपकी जो sound है वो spread करेगी, and that is the reason the people who are sitting at the back, they will also get the direct sound from the speaker in a better way. So whenever someone speaks, the sound is going to spread out and it is going to be scattered, which basically means that it will be partly reflected and partly absorbed from all the possible surfaces that are present in the room. So the audience that is present in the room, they will hear the direct sound from the source, from the speaker, and that direct sound will be followed by a series of sounds which is being produced by the reflections from the different surfaces. आपके different surfaces से reflection होगी उसकी sound की, and आप वो sound जो है वो आपकी original sound के ऊपर superimpose करेगी. Reflected जो sound होगी वो with time उसकी intensity reduce हो जाएगी, because every time आपकी sound reflect होगी उसका एक part जो है वो absorb हो जाएगा. Let's say every time 30% जो है वो आपकी absorb हो जाती है. So first time 70% reflect होगी, second time 70% का 30% absorb हो जाएगी, right? और remaining जो है वो आपकी reflect होगी. So with time क्या होगा? आपकी जो reflected sound की intensity है वो continuously reduce हो जाएगी. And जो listener है, he or she is going to hear the direct sound as well as the reflected sound. And basically, then reverberation is defined as the persistence of the sound, which is basically due to reflections from the different surfaces when the speaker has stopped speaking. In loose terms, that is called as reverberation. Ma'am, what is the difference between reverberation and echo then? Exactly. Let's talk about in the next class. If you talk roughly, echo is something our human mind cannot differentiate between the sounds which reach to us within 1/10th of second. So अगर आपकी कोई sound reflect करके within 1/10th of second आप तक पहुंचती है, that would be categorized into your reverberation. Echo में क्या होगा? आपकी जो sound है usually वो एक बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के पास जाके वहां से रिफ्लेक्ट होके आपके पास में आएगी, एंड आपकी जो सेम साउंड है वो आपको 2 टाइम्स सुनाई देती है. रेवर्बरेशन में दैट डजंट हैपन. ओके मैम. ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट रेवर्बरेशन में भी हमें सुनाई देती है लेकिन हमारा माइंड. हाँ जी बच्चे, रेवर्बरेशन में भी
रिवर्बरेशन में भी हमें 2 बार आवाज नहीं आ रही बच्चे। मैम मैं बोल रहा हूँ रिवर्बरेशन में भी। हेलो। हाँ जी बच्चे, रेवर्बरेशन में हमें 2 बार सुनाई देती है आवाज, लेकिन हमारा माइंड नहीं उसे डिस्टिंक्ट कर पाता। रेवर्बरेशन में हमारा जो माइंड है वो रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो बिफोर 1/10 ऑफ सेकेंड आ जाती है, तो हमारा जो माइंड है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इट सीम्स एज इफ जो दूसरी साउंड आई है वो पहली साउंड का ही पार्ट है। हाँ जी। अब बेटे ये सब स्लाइड्स जो हैं रोहन आनंद कश्यप, ये स्लाइड्स LMS पे अपलोडेड हैं,